A glorious morning to one and all present here. I, Anamika Sharma, on behalf of Vision Group of Colleges, welcome you all in this talk show. My dear friends and students, as you all know, we all are compelled to be locked up ourselves at our places, and we usually think that we are having ample of time. But without proper time management, we can't be more effective and efficient. And when we are at workplaces, we usually feel that we are running short with time, isn't it? Yes. So let's talk on time management today in order to know various techniques of time management. First of all, I would like to welcome Dr. Sadhna Mandoi ma'am, Director, Vision Group of Colleges, in this talk show. Good morning, everybody. Welcome, Thank ma'am. you, Anamika. Good morning, ma'am. How are you, ma'am? I'm great. Thank you so much. And how are you, Anamika? I'm also good. Thank you so much, ma'am. Thank Ma'am, you so much. see, We are going to have great day today with Mr. Vikram Shetty. And time, something, the word itself is a great meaning, having great meaning. And we are going to learn a lot from Vikram sir about how to manage your time or how this time at pandemic, when we are having a lot of troubles. But then this time is again very precious and we should not let go like that. So today's session, I think, definitely, ma'am. yes. Definitely, ma'am. You are perfectly correct in this context, ma'am. I would like to take privilege to invite our today's esteemed keynote speaker, Dr. Vikram Shetty, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Vikram sir. Welcome. Thank you. Sir is Sir is a researcher, productivity coach, and co-founder of Ninsar Agritech Pune, Maharashtra. Sir has completed his doctorate from a leading American university and has been president of Indian Student Organization USA and also the project coordinator of Association of India's Development. Moreover, Sir has been the founder and convener of Entrepreneurship Cell India. Apart from it, Apart from it, Sir is also the founder and director of two startups. Sir is also having a mission to train 10,000 students in perspective of time management only, as it's a key ingredient of success. A heartily welcome to such a dynamic personality in this talk show, sir. Sir, kindly allow me to let you know something about our college too, as we are interacting for the first time, and you are going to interact with our students too. So, sir, since 2005, Vision is working as a B school in Chittorgarh, and it's a leading and premier institute, and offering various courses like MBA, BBA, BCA, BSc, and BSc, sir. And it's AICT approved, only college in the Chittorgarh, and graded as A by RTU. So, once again, on behalf of Vision Fraternity, sir, I heartily welcome you, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you. Yes, sir. So, our students are expecting from this workshop that they usually face certain problem regarding time management. कि कौन सी techniques है जिनको हमें use करना है so that we can set the priorities. हम अपने goal से distract नहीं हो, किस तरीके से हमारा concentration increase हो सके और कैसे हम work and हमारी जो family life है उसमें कुछ एक parallel setup set कर सके. So our students and our faculty members are very keen to know such type of strategies and how we can be more effective and efficient in our work, sir. So over to you, sir, and the stage is yours completely, sir. Thank you very much, Anamika, ma'am. This was a wonderful introduction. Sometimes, it feels really good to hear from someone else and in such elaborated way. बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है. How are you all today? Very quickly in the chat box. How are you today, this morning? Use the chat box, guys. You have to use it generously today. How are you all doing today? I have around 250 registered participants. I should see 250 responses right now. How are you doing today? Come on. Where is the chat box? It is not firing. It is not firing. Come on, let it get on fire. Great. I see some responses coming in.
Good morning, Rohit. Thank you, Saurav. Good morning, Supriya. Good morning. Guys, I'm Nuskan. Thank you so much. Thank you for asking. Thank you so much. I'm doing wonderful, which is why I'm here today to share a fantastic secret about time management. Okay. And I'll tell you what, you know the secret. Okay? I'm just going to hammer it in. And I'm going to hammer it in such a way that you will never, ever forget it. All right. All of you excited? All of you excited for today's session? Your 90 minutes are mine. Are you excited or not? Excited? Bring it on. BIO. Type in BIO if you're ready. Bring it on, guys. Come on. All right. I see Ritesh coming in. Muskan. Yes. Fantastic. Okay. So let's go ahead. All right. In the chat box, very quickly tell me, why are you attending this session? Guys, you're going to spend your valuable 90 minutes with me. I really thank you for that. You could have been somewhere else doing something else, but you're here. And you're here for a very good reason. If you can share that very quickly in the chat box, why are you here today? Why are you attending this session? Of all the things that you had to do, you chose to be with a bald guy, listening to him for 90 minutes. Why? Why are you here today? One short sentence. I think there is a delay between the messages that you're sending and I'm receiving. So the pauses might come across as weird, but I'll still wait for your responses. You're going to give your 90 minutes to me today, valuable 90 minutes. I really appreciate it, guys. It's a lot of time. And that's why I need to know, why are you attending this session? Okay, Muskan says to learn how to manage time, to learn how to manage our time. All right, Saurabh, sorry. Urvashi is excited. Ankush wants to learn about time management. So can I fairly assume that on a macro level, all of you are confused? There is so much happening around me. There is so much. There is college, there is home, there is this, there is that, girlfriend, boyfriend, mother, father, parents, sasuma, sasur, whatever. There is a whole lot of things that are happening, right? And then suddenly you see, holy crap, I am 50 years old. And what have I done? And that's when it hits you. Well, students, you still have probably 30 years to that question, but let me tell you, 30 years are going to go like a breeze. Boom, will be gone even before you realize. Okay, so don't think that this is a question that is going to be tackled only by the 50s and the 40-year-old. This is something which you have to challenge, tackle, and overcome today itself. There are a lot of things that are happening in your life right now, and with this pandemic specifically, it has become so challenging. We are depressed because we are not able to meet our loved ones, right? Our friends, they are not with us. Now, our relatives, they're not with us. And some of you might be away from your parents. There would have been friction there as well. घर पे जाना है लेकिन जा नहीं सकते, लॉकडाउन है, दिमाग का दही हो गया. It's a very popular statement in Mumbai. I don't know if you're aware of it, but दिमाग का दही हो गया है मेरा, which means your brain is literally curdled. If that is happening with you, let me tell you, it is not your fault. Okay, it's not your fault. You're a human. You were born a human. Okay, so don't be harsh on yourself. And the good news is, you can overcome that. You absolutely can overcome that. You want to learn how? You want to learn how to do that? You want to learn how to overcome your time management problems, your procrastination issues, your goal setting, and all those things? Use the chat box. Let me know. Do you want to learn that? Absolutely. Sean says yes. He is active. All right. I see a few more yeses coming in. Fantastic. Okay. Very quickly, I'm going to ask you one more. I see someone saying Hindi. Do you guys want to do this in Hindi? So we can be bilingual. No issues in that, sir. कोई बात Yes, नहीं, चलो definitely, sir. चलो कोई बात नहीं, टेकन. हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स हो जाएगा. मेरी हिंदी बहुत ही घटिया है,
मुझे माफ करना, इंग्लिश अच्छी है, हिंदी घटिया है, ठीक है? इफ यू आर ओके विथ इट तो मैं हिंदी में बात करूंगा, मजाक नहीं उड़ाना मेरा बाद में, ठीक है ना? ओके, चलो, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए, जिंदगी में, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा गोल क्या है आपका? सबसे बड़ा गोल क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हो? क्या करना है आपको? क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? सबसे बड़ा गोल, हाँ, छोटा मोटा नहीं, मुझे ये बुक पढ़नी है, वो खत्म करनी है, नहीं। सबसे बड़ा गोल क्या है आपका जिंदगी में? भूल जाओ ये पैंडेमिक, कुछ नहीं है, भूल जाओ सारे प्रॉब्लम्स, कुछ भी नहीं है, तो क्या अचीव करना है लाइफ में? विशाल कह रहे हैं बिजनेस सेटअप करना है, शान कह रहे हैं सक्सेसफुल होना है, ओके। मुकुल कह रही है, मुकुल कह रहा है सॉरी, सक्सेस अगेन। मनु सेज नो, शी गिविंग समथिंग एल्स, ओके। क्या अचीव करना है यार लाइफ में? बड़ा बताओ, सबसे बड़ा गोल क्या है? मानस का गोल है टाइम मैनेजमेंट, ओके। गोल नहीं है यार, वो तो जर्नी है, वो तो 5 साल 6 साल चलने वाली जर्नी है। अचीव हैप्पीनेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, के टू बी सक्सेसफुल, किसको नहीं बनना यार सक्सेसफुल? रोहित कह रहे हैं आईपीएस ऑफिसर बनना है, फैंटास्टिक रोहित, सल्यूट टू यू माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर चूजिंग दिस वन एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी अ गुड आईपीएस ऑफिसर, सॉरी। ध्रुव कह रहे हैं टू बिकम अ गुड ह्यूमन फर्स्टली, इट्स नॉट अ गोल। ये मैं उम्मीद रखता हूं कि आज भी आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ये गोल नहीं हो सकता। माय ड्रीम कंप्लीटेड, गाइस, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गोल्स, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, आप में से किसी का भी गोल अचीव नहीं होगा, सिर्फ एक बंदे का होने वाला है, बाकी किसी का नहीं होने वाला है। क्योंकि बुरा मत मानना, वो कैसे अचीव करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर मैडम अलाउ करेंगी तो, और आप लोगों को इंटरेस्ट रहा तो, ठीक है? एकदम लास्ट में बताऊंगा कि आपका गोल सक्सेसफुल क्यों नहीं होने वाला है और वो अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है? ये लास्ट के लिए रखेंगे, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे। चलो बढ़िया है। अब एक चीज बताइए, आप अपने गोल के कितने करीब हो? कितने करीब हो आप अपने गोल के? बस सर कल ही बनने वाला है, कल ही मैं खुश होने वाला हूं, 1 साल में खुश होने वाला हूं, कब होने वाला है ये पॉसिबल? हाउ क्लोज आर यू टू योर गोल राइट नाउ? आज के दिन में आप अपने गोल के कितने करीब हो? थोड़ा, बहुत, बहुत ज्यादा, पता ही नहीं, क्या है? चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज, आप अपने गोल के कितने करीब हैं? बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस है, राइट? एग्जाम पेपर में ये नहीं पूछते हैं। सौरभ सेज वी नेवर गेस अंटिल वी गेट। विशाल पता नहीं। प्रियांश, मानस, ओके। Aditi says still struggling. Vandana says 6 years. Vandana, I'm really happy that you know how far you are, because that is a big thing. Tanvi says no idea. Arpi says 50%. 50% is as good as not knowing. Okay. Guys, you know what? At this age of yours, if you don't know how close you are to your goal, it's all right. But what is not all right is, अगले 6 महीने में आपको ये क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा पता है? एक, आप अपने गोल के करीब पहुंचोगे ही नहीं। दो, आप पूरी दुनिया को गाली दोगे, आप कॉलेज को गाली दोगे, आप फैकल्टी को गाली दोगे, आप पेरेंट्स को गाली दोगे, आप अपने पियर्स को गाली दोगे। आप बोलोगे यार वो तो पढ़ के बहुत आगे निकल गया है यार, वो क्या है, उसका तो नसीब अच्छा है, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, ये सारी कंप्लेंट्स करोगे। लेकिन वो सब झूठ होता है। सच क्या है पता है? आपका गोल, आपका फ्यूचर, ये आप खुद बनाते हो, ठीक है? ये याद रखना। कोई भी अगर कुछ और बताता है तो वो गलत बता रहा है। आप अपना नसीब खुद लिखते हो। भगवान ने लिखा हुआ है, वो जो आप मानते हो वो मान लीजिए, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उस गोल के करीब आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ये फैक्ट है।
ये सच्चाई है। ठीक है, चलो आज हम क्या करने वाले उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। पहले तो ये समझ लेंगे कि टाइम क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके पास टाइम कितना है एग्जैक्टली। ठीक है, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स आवर टाइम एवरी डे। कहां जाता है अपना टाइम, फिर देखेंगे टाइम कैसे बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है टाइम, मुझे तो लगता है बन सकता है, बताता हूं मैं कैसे। और जो टाइम अपने पास है, हाउ डू वी मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, उसमें सबसे ज्यादा काम कैसे निचोड़ ले उस वक्त में से, वो भी एक आर्ट है, वो एक स्किल है। एंड फाइनली थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, सो दैट यू नो देयर इज 1-to-1 पर्सनल, मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगा। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं व्हाट इज टाइम। अब चैट बॉक्स में मुझे बताइए आपके हिसाब से टाइम क्या चीज है, टाइम किस चिड़िया का नाम है, आपको क्या लगता है टाइम क्या है? Right, please use the chat box and answer this question. What is time? क्या लगता है आपको वक्त क्या होता है? आप अपने हिसाब से बताइए। A period of minutes, hours, days, etc. Saurabh, that is absolutely correct. It is a technical definition of time. Very true. Time is a drop of life. Time which makes different from other. Okay. Okay. Time is running. Of course, that is a property of time. Time किसी के लिए नहीं stop होता. Very true. Time and tide wait for no man. A unit with help us doing work properly and timely. Okay, of course, technical definition. All right, how much you utilize, जो लौट के कभी नहीं आता। बिल्कुल सही हिमांशु, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जो वक्त गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। It's a key ingredient of success. Shan, absolutely correct, my man. It's a key ingredient of success. Well, let me tell you something else. Time is a resource. Okay, time is a resource. क्या आप समझते हो रिसोर्स क्या है? Right? जैसे पैसा एक रिसोर्स है, आप उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम ऐसा रिसोर्स है कि जिसमें से बाकी सारे रिसोर्सेस बन सकते हैं। कोई भी रिसोर्स लीजिए, आपको पैसा बनाना है, आप करोड़ों बना सकते हो अगर आप वक्त का सही इस्तेमाल करते हो। All of you agree with me on this one? If you manage time and yourself very well, you can make crores of rupees. All of you agree with this or not? बताइए मुझे, क्या लगता है आपको? वक्त का सही इस्तेमाल करने से हम कोई भी रिसोर्स पैदा कर सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक इन्वेंशन हो, चाहे वो पोएट्री लिखना हो, चाहे वो डांस क्रिएशन हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पैसा हो। आपको जो चाहिए वो आप वक्त का सही इस्तेमाल करके बना सकते हो। लेकिन इसके बावजूद हम कभी ये सोचते ही नहीं, हम वक्त का सही इस्तेमाल करते ही नहीं, राइट? हमें ऐसा ही लगता है हमेशा, यार बर्बाद हो रहा है वक्त मेरा। We never utilize our time in the right way. And I'll tell you what, I'll tell you guys, आप लोग अकेले नहीं हो। मैं जब भी आपकी उम्र का था, मैंने भी यही किया जो आप आज कर रहे हो, बस तभी फेसबुक नहीं था, तभी कुछ और था। आज आपके लिए फेसबुक है, आज आपके लिए इंस्टाग्राम है, और क्या है, पबजी है, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे टाइम पे वो नहीं था, मेरे टाइम पे कुछ और था। हम क्रिकेट खेलते थे, हम ये खेलते थे, वो खेलते थे, फलाना टिमका टाइम पास करते थे, कहीं भेल खाने गए, कहीं कुछ डोसा खाने गए, वही बकर चलती थी। Okay, I think there is a spam person in the audience right now. There is Philemon or something. Okay. Anyways. Now, if time is resource, will you spend it or will you invest it? Let me ask you this way. Will you waste it or invest it? What will you do? Time आप waste करोगे या invest करोगे?
in the chat box. Yes, Dhruv, I agree with you. You know, the big problem is हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, ऐसा लगता है. You know, कभी कभी एक डायलॉग भी आता है, अरे तुम थोड़ा मुझे वक्त दे सकते हो तुम्हारा, और यू नो ऐसा स्टाइल में हम बोल देते हैं, अरे वक्त ही तो यार देने के लिए, बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं. I see that most of you are planning to invest it, but I'll tell you what, like any other resource, you can spend time or you can invest time. Let me give you an example. मैं अगर आपको 100 रुपए देता हूं, या मान लीजिए 500 रुपए देता हूं, most of you at your age right now, पैंडेमिक नहीं है ऐसा समझो, पैंडेमिक नहीं है, अगर मैं आपको 500 रुपए देता हूं, आप क्या करोगे उसमें से? आप घर का राशन लाओगे, आप बर्गर खाओगे, आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आप कपड़े लोगे, कोई गाने खरीदोगे, कोई प्राइम अमेजोन खरीद लेगा, फ्लिपकार्ट का कुछ खरीद लेगा, राइट? लेकिन आप में से केवल 5% लोग ऐसे हैं कि जो उस 500 रुपए का स्टॉक खरीदेंगे. स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सुना है? आप में से केवल 5% लोग वो करेंगे. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च बता रहा है पूरे इंडिया को लेकर, ठीक है? और यही चीज मैं अभी बताता हूं टाइम के बारे में. हम कभी ये सोचते ही नहीं कि टाइम कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए. हम बस वो जाया करते जाते हैं, दुनिया को गाली देते हैं और वक्त जाया करते जाते हैं. यही होता है अपनी जिंदगी के साथ. Let me ask you this, how many of you have invested your time in personal development courses? जैसे कि ये वाला, मैं टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी का कोच हूं. मैं आपको पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोगों ने खुद में इन्वेस्ट किया है अपना वक्त, खुद की डेवलपमेंट में? बहुत कम लोग रहेंगे ऐसे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस हमें ये नहीं पता चलता, अरे ये क्या चीज है, राइट? नाउ आई टेल यू व्हाट, इफ यू इन्वेस्ट टाइम same personal development programs, you are looking at a compounded returns forever. कंपाउंडिंग का मतलब समझते हो? आप एमबीए कॉलेज में हो, राइट? आप कंपाउंडिंग का मतलब समझते हो? सबसे, अगर इस दुनिया में कोई कंपाउंडिंग समझता है तो वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं. आज कोई चीज 2 टाइम्स बढ़ती है, कल वो डबल होती है, तो 4, 8 बढ़ती जाती है, थोड़ा फ्लैट लाइनिंग होता है, एंड देन सडनली इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. नाउ व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जब भी आप अपना वक्त और पैसा खुद पे इन्वेस्ट करते हो, आपकी ग्रोथ कंपाउंडिंग होती जाती है और आपके रिटर्न्स दुगने तिगने चौगने बन जाते हैं. दिस इज लाइफ, दिस इज नॉट अ सीक्रेट, दिस इज लाइफ. Very few of us do that. Now what I'm going to do is, I'm going to ask you a very important question. How much time do you think you have? Forget the marne wala part. Let us understand how much time do you really have before you retire. Use the chat box, please. How much time do you have? कितना टाइम है आपके पास, बताइए. Come on, guys. How much time do you think you really have? Saloni says time has no limitations until we die. Urvashi says don't know. Okay. What about others? Harshal, don't know because it's not in our hands. Harshal, you are mistaken, my man. Tanvi says not much. Rajkumar, no time. Vishal, pata nahi. Aditya says no guarantee. Aditya, I agree with you. We cannot guarantee that we are going to live the next moment. But I'm assuming that if you live a full life, disease free, right? In that case, how much time do you have? Can't know that. Bhavna says can't know that. Priya says a little bit. Suruchi limited. Sanya says don't know. Himanshu says roughly 30 years is what he has. Okay, let's do a quick calculation, guys. Let's do a quick calculation. I'll tell you how to calculate the amount of time you have right now, assuming that you're going to live a full life. Okay.
पेन और पेपर साथ में है ना आपके पास? पेन और पेपर साथ में रखा है? ठीक है, आई वांट यू टू डू सम मैथ. कैलकुलेटर भी साथ में रखिएगा. Okay. Now there are three things that you have to know. Life expectancy at birth. So ये नंबर का मतलब है कि आप जब भी पैदा हुए तब इंडिया में क्या एवरेज एज थी जिंदा रहने की. You know, it's a very weird thing when I say it in Hindi. But I was born in 1981. Life expectancy at that time was 59. इसका मतलब ये है कि अगर मैं 81 में पैदा हुआ हूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी उम्र की 59 तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा. Now this is not a medical thing. ये कोई मेडिकली प्रूवन नहीं है. इट इज जस्ट अ डेटा. काफी सारे लोग देखे कब पैदा हुए कब मर गए, तो वो हिसाब से उन्होंने एवरेज निकाला, एक्सेल शीट में डाल के हो गया. गवर्नमेंट डेटा. आज की डेट में, आज की तारीख में वही नंबर है 70 इयर्स. सो इंडिया में अगर आप आज पैदा होते हो तो 70 साल जियोगे. मेडिकल प्रोग्रेस हो चुका है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है. वी आर हैविंग अ फैंटास्टिक लाइफस्टाइल. सो 70 इयर्स एवरेज है. ये एवरेज है, प्लीज अंडरस्टैंड. ये नेशनल एवरेज है. अलग अलग सिटीज में कम ज्यादा हो सकता है. दूसरा नंबर है रिटायरमेंट एज. इंडिया में रिटायरमेंट एज इज 60 इयर्स. 62 होती है कभी, बट लेट्स अज्यूम दैट 60 इयर्स. यू कैन वर्क आफ्टर दैट, बट फ्रैंकली मेरे हिसाब से उम्र की 60 साल के बाद आपने चिलैक्स करना है. आपने सोसाइटी को देना है, ना कि स्ट्रगल करना है. एंड इट इज अप टू यू, द यंगर जनरेशन, टू मेक इट हैपन. टू मेक इट हैपन. You work hard, you work smart. आप इस तरीके से काम कीजिए कि अगले 20-30 सालों में आप इतना पैसा इकट्ठा कर ले, इतनी पावर और फेम इकट्ठा कर ले कि उसके बाद आप केवल घर पे बैठ के सोसाइटी का भला करेंगे. जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको काफी सारी लाइफ में दिक्कतें हो रही है, उनको सपोर्ट करेंगे, ना कि खुद काम करेंगे. मस्त में गोवा जाइए, शैक लेके बैठ जाइए, वहां पे चिल मारिए, डोनेशंस कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, विमेन एम्पावरमेंट कीजिए. जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन 60 साल के बाद आप काम मत कीजिए. काम मतलब पैसे कमाने का काम. 60 साल के बाद पैसे देने का काम कीजिए, सोसाइटी को दीजिए वापस. बहुत जरूरी है ये. नाउ द थर्ड नंबर दैट यू शुड नो इज योर एज. एंड आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू नो योर एज, राइट? कम ऑन, वी आर इन 2021. आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपको अपनी एज पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं. I'm taking an example of one राजीव. राजीव नाम का एक लड़का है, इंडिया में अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है. मेरे ख्याल से आप लोगों की उम्र समवेयर बिटवीन 24 to 27 होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरेज. बट आई हैव अज्यूम्ड अंडर ग्रेड स्टूडेंट जिसकी उम्र 20 साल की है. ओके, रिटायरमेंट एज 60 साल, उसकी उम्र है 20 साल. तो रफ कैलकुलेशन ये बताता है कि उसके पास 40 साल का टाइम है. ऑल ऑफ यू अग्री? Very quickly, tell me how much time you have until you retire at the age of 60. Give me a rough number. I don't want to know your exact number. I know there are a lot of women in the group और उनको एज बोलना पसंद नहीं है, मैं जानता हूं. एज रफ बताइए. ये रेंज मेरे पास अभी है, चलेगा? Abhishek says 40 years, roughly the same, right? 37 years. Yeah, you would be in the same age group, somewhere between, I would say, 22 to 27. आसपास कहीं होंगे. ठीक है? Fantastic. Now, guys, this next slide, this is going to create an earthquake. आपकी जिंदगी हिलने वाली है. देख लीजिएगा ध्यान से एकदम. These are 7 things that you will not be able to escape. You will not be able to escape. First thing is sleep. Roughly, average in India, people sleep for 7 hours. Okay, that is 29% of your lifetime. खाना तो खाना है, सब पापी पेट के लिए ही कर रहे हैं, राइट? भूख तो लगेगी, मतलब ब्रेकफास्ट आया, लंच आया, डिनर आया, इवनिंग स्नैक आया, इसमें कम से कम 2 घंटे चले जाते हैं. ये हो गया लगभग 8.34%. फिर आया ट्रैवल. अभी ये जब भी मैंने प्रेजेंटेशन किया था तब मैं मुंबई में था. मुंबई में तो बिल्डिंग के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने तक आधा घंटा लग जाता है. इतनी ट्रैफिक है वहां पे. तो मान लीजिए अपने घर से अगर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो कम से कम दिन में आपको 2 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है. पैंडेमिक की बात छोड़ दीजिए, आप ट्रैवल अभी ज्यादा नहीं कर रहे हो, लेकिन जब भी कर रहे थे, एनीवेयर बिटवीन 45 minutes to 2 hours इज एवरेज इन इंडिया.
यू वुड बी एक्सट्रीमली लकी कि आप कॉलेज के एकदम नजदीक रह रहे हो, 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। ये बहुत लकी लोगों को ये मिलता है, जो क्या कहते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म का बहुत सारा पुण्य लिया हुआ है, उनको ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर रहा पर्सनल हाइजीन, नहाना धोना, ब्रश करना, टॉयलेट जाना, ये सब तो है, इसको तो छोड़ नहीं सकते, राइट? यू कांट से दैट नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू द टॉयलेट फॉर 1 मंथ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ बाथ फॉर 1 ईयर। नहीं पॉसिबल है ना वो, राइट? तो उसमें कम से कम अपना दिन का 1 घंटा तो जाना ही जाना है। हाँ, अभी आप लोग ऐसे हो यार, नेटफ्लिक्स लेके बैठ गए, टॉयलेट गए, तब तो 2 घंटे भी जा सकते हैं, पूरी मूवी देख के बाहर आ गए तो उसमें 2 घंटे भी जा सकते हैं। फॉर गॉड सेक प्लीज ऐसी कोई हरकत मत कीजिए, देयर आर पीपल वेटिंग आउटसाइड, ओके? प्लीज डोंट डू दैट। प्लस इट्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड, प्लस अनहाइजीनिक, सो व्हाटएवर। तो पर्सनल हाइजीन में कम से कम 4.2% टाइम अपना जाने वाला है। सिकनेस, यार महीने में एक बार तो सर दर्द होगा, कभी तो एसिडिटी होगी, बाहर गए कुछ चाइनीज खा लिया, ये खा लिया, फलाना मसाले वाला कुछ तो खा लिया, बहुत सारे मसाले जिसमें पेट में गड़बड़ हो गई, डायरिया हो गया। ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो महीने में एक आध बार तो आती ही है, बराबर? मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूं जिसमें फ्रैक्चर हो गया 2 हफ्ते निकल लिए, जिसमें कुछ कार्डिया के इशू हो गया 2 हफ्ते निकल लिए, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। जो छोटी मोटी बीमारी, वो कम से कम महीने में एक बार तो आती ही है। तो ऐसे अपने जो अगर 12 दिन पकड़ लिए तो लगभग 3.29% टाइम उसमें चला गया, राइट? मैरिज, हाँ, अभी अगर आप मुझे ये बता रहे हो कि आप मैरिज ही नहीं करोगे तो नंबर 6 और नंबर 7 ये आपके जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन जो मैरिड है यहाँ पे, वो मुझे जवाब दीजिएगा, फैकल्टी, मैनेजमेंट या स्टूडेंट्स जो भी मैरिड है, आपका जब भी मैरिज डिसाइड हो रहा था तो मैरिज डेट के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद आपकी जिंदगी में आपकी शादी को छोड़कर कोई भी बात चल रही थी या नहीं? एंड आई कैन गारंटी यू द फर्स्ट 6 मंथ्स और फर्स्ट 1 ईयर लड़का लड़की ढूंढने में चला जाएगा, फिर वो कोर्टशिप पीरियड आएगा, और अगर आपकी लव मैरिज है तो वैसे ही शादी के पहले आप एक दूसरे की तरफ देखते देखते ही टाइम पास करते हो, तो वो तो वैसे ही जाने हैं, बराबर? और शादी के 6 महीने बाद वाला जो पीरियड है वो हनीमून पीरियड रहता है, एक दूसरे को इंप्रेस करना रहता है, बहुत टाइम पास करना रहता है, उसमें चले जाते हैं। 6 महीने के बाद पता चलता है अबे ये असलियत है, तो उसके बाद एक्चुअली हम टाइम यूज करना शुरू करते हैं। दैट इज व्हाट टिपिकली हैपेंस, ओके? द पॉइंट इज you're going to spend 1 year around your marriage, okay? 1 year around your marriage, and it is especially bad for the women, okay? अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? I am not a male chauvinist person, okay? नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में, हमारे नहीं, वर्ल्ड वाइड कल्चर में, द गर्ल गोज टू द गाइज हाउस, मतलब वो अपना सब घर छोड़ के एक नए घर में जाती है, उसको एक नए रूल्स सीखने होते हैं, अपने रूल्स वो लेकर आती है। तो ये सारी चीजों में ना कम से कम 1 या 2 साल तो उसके निकल ही जाते हैं। लड़के लोग को समझ में ही नहीं आता भाई ये अजीब क्यों बिहेव कर रही है। शी हैज हैड टू लीव हर लाइफ कंप्लीटली, हर पीपल कंप्लीटली अवे एंड गो टू अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम लड़कों से थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा होती है। सो यू हैव टू मैनेज फॉर दैट एज वेल, यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट एज वेल। देन कम्स चाइल्ड बर्थ। अपने पेरेंट्स बहुत अजीब होते हैं, पहले तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फिर बी करो बी करो बी करो, फिर एमबीए करो एमबीए करो, फिर शादी करो शादी करो शादी करो। उस पर तो रुकते ही नहीं, उसके बाद बोलते बच्चे पैदा करो बच्चे पैदा करो, एक हो गया तो दूसरा दूसरा पैदा करो। अबे चल क्या रहा है? दे आर गोइंग टू बी आफ्टर यू फॉर एवर। Now, childbirth is at least 1 year towards the child. And I will not say that it is time wasted, because it's a beautiful thing. You're bringing a new life on this planet. It's a wonderful thing. But you know what? It also comes with its own big challenges, because of which you will not be able to do anything with a focused mind. नहीं होगा। देखो, for the woman it is difficult because she has had that child in her stomach for 9 months. हॉर्मोन्स का तो पूरा अंदर ऑर्केस्ट्रा चालू रहता है। She is getting angry all the time. She is physically not fit. It's a nightmare for the woman. The married women who have had a child, all of you agree with this?
I have seen my wife go through a lot of challenges. It's a challenge. Now you would say, अरे लड़के को थोड़ा easy रहता है क्या? नहीं. And girls, I'm going to ask you a question. Do you think that guys are insensitive? They don't understand 50% of the things that you say or talk? Do you believe that? I want only the girls to answer. So Shreyashi says yes. I want only the girls to answer. यार मैं कितना भी बोलूं, चाहे गला फाड़ के बोलूं, इस लड़के को कुछ समझ नहीं आता. फिर वो आपके पिताजी हो, आपका भाई हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो. Okay, Manisha says no, no. Okay, आपको ऐसे नहीं लगता? Manisha, you and Vision Group of College, you guys are lucky. You have found a guy who understands you, but that's not normal. Okay, because God has designed guys to be, I shouldn't say dumb, but शांति होते हैं वो. शांत होते हैं मतलब उनको ये सारी चीजें जो लड़कियों को समझ आती है, जो दिखती है, वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ती. भगवान ने उनको ऐसा बनाया है क्योंकि, and this is very useful, particularly when the guy's wife is pregnant, because the wife is doing all these things, the guy has to handle. He has to be the buffer. All right. And he has to absorb all the problems that the wife is throwing out, varna she will not be able to handle it all herself. It's a very important role. Now, why am I bringing this up here? Because the guy is equally involved in the childbirth and raising them. If they are not involved, that's a problem. God has given them a skill to absorb things and be, separated from the situation, and they have to use that skill to help the woman overcome that challenge. Iska matlab kya hua? The husband and wife, they are going to spend 1 year, and actually not 1 year, it is at least 3 years, because 3 साल तो लगते ही है बच्चे को खुद का पॉटी करने के लिए. तब तक तो अपने को ही साफ करना है. Guys, you may sound that this is very, I'm saying very weird and बहुत ही घटिया चीज है मैं बात कर रहा हूं, बट ये फैक्ट्स हैं. अगर आप शादी नहीं करना चाहते, अगर आप बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, तो आपके लाइफ में नहीं आएगा. अगर आप ये दोनों चीजें रखना चाहते हो, तो आपके लाइफ में ये आएगा. You can't escape this. You cannot. All right. So what this means is, of the 40 years that are available with Rajiv, he's going to sleep for 11.6 years. He's going to sleep for that time, 7 hours daily. He's going to eat 3.32 years. He's going to go to the toilet, do brush, bathroom, nahana dona for almost 1.5 years. 3.32 years of travel, 1.31 years of sickness, 1 year of marriage, 1 year of childbirth. And you know how much time you have? 17 years. This is for Rajiv, who was 20 years old. Now imagine my situation. I am 40 years old. I don't even have 6 years of activity left. See, this is the actual usable daytime of activity left with you. Okay, and I'm not even considering the 10% of time that adults in India spend on social media. How much time do you guys spend on social media? WhatsApp, Facebook, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hotstar, Hulu, whatever it is. Come on, quickly. How much time do you spend there? अब सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मकटक, वो जो भी है, जो नए आए हैं, पबजी, राइट? आप कितना टाइम देते हो उसको दिन में? Shreyasi, 3 hours a day. What about others? Thank you, Shreyasi, for being honest. I really appreciate that. Akash, thank you so much. 2 to 3 hours. You guys are really honest. And this is the start in your life that you'll realize why you shouldn't be doing that. Guys, roughly in India, the average is, Muskan, thank you so much. Ritesh, thanks, my man. Dhruv, thank you. Bhavna, thank you. SK Sheikh, thank you so much. That's the average, guys. You are spending close to 3 hours every day for social media.
Now, if I look at 3 hours, it is close to the amount of time that you spend on food. So let's say 4 hours is gone towards social media. इसका मतलब आपके पास केवल 13 साल बचे हैं. Just 13 years. What are you feeling right now? क्या लग रहा है आपको? Is that good enough? Is that good enough? Tell me, guys. 13 years, is that good enough for you? What are you feeling right now? क्या महसूस हो रहा है? Are you shocked? Are you happy? Are you proud? क्या महसूस हो रहा है? डर लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? बताइए. I'm waiting. I want to know at this moment. I want to know आपके feelings क्या हैं? Rajiv is shocked. Bhavna is little shocked. Samarth says your math blew my mind. The math might be off, Samarth. एक आध digit इधर उधर हो गया होगा शायद. आप कर लीजिएगा, मैंने आपको उसका तरीका बता दिया है. I was shocked too, guys. And guess what? You at least have 13 to 17 years. People of my age, when I realized the importance of time management, I have only 6 years of active life left with me. And I can't afford to spend it on PUBG, Instagram, social media. I can't do that. It will be a criminal offense. मेरी 3 साल की एक छोटी बेटी है. मैं जब भी सोशल मीडिया पे जाता हूं बेवजह मुझे उसका चेहरा सामने आता है और मैं अपने आप को कोसता हूं. ये टाइम पास करना है या बेटी का फ्यूचर बनाना है? और मैंने तब भी डिसाइड कर लिया. एंड दिस हैपेंड, मैंने मेरी स्टोरी संध्या मैडम को बताई, सॉरी साधना मैडम को बताई. आई एम वेरी सॉरी मैम. आई शेयर्ड माय स्टोरी विद डॉक्टर साधना एंड अनामिका मैम कि ये मेरा चेंज जो आया वो पैंडेमिक की वजह से आया. बट नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट नो मोर ऑफ दिस नॉनसेंस. आई एम गोइंग टू फोकस माय लाइफ on helping others and in the process creating a future for my daughter. And the way I'm going to help others is taking this message to students like you. Because guys, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप आज स्टूडेंट हो और मेरे हिसाब से इस देश का भविष्य स्टूडेंट्स ही बना सकते हैं, हमारे जैसे बुढ़ों नहीं. आप लोगों के हाथ में मेरे इस देश का फ्यूचर है. और मैं ये चीज बताता हूं कि मुझे मेरे देश का फ्यूचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस देश में मेरी बेटी बड़ी होने वाली है. ये देश बहुत अच्छा आज है, लेकिन इससे कई ज्यादा सुपर पावर होना जरूरी है और वो आप लोगों के हाथ में है. प्लेन एंड सिंपल चीज है मेरे लिए ये. और मेरा गोल है कि इस साल मैं 20,000 स्टूडेंट्स तक टाइम मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट लेकर जाऊं ताकि वो अपनी जिंदगी संवारे और कुछ ऐसी अमेजिंग चीजें कर दे कि अपना देश बहुत ही आगे चला जाए, बहुत आगे चला जाए. फिर चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, फिर चाहे वो कोई कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ऑल ऑफ यू विथ मी? क्या आप लोग मेरे साथ हो? Shan, you can achieve your goals with the time left. You just have to follow through, my man. You just have to follow through. And I'll tell you how to do that very quickly. I might not be able to change your life in the next 45 minutes, लेकिन मैं कम से कम वो डायरेक्शन तो बता सकता हूं कि किस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है शान, ये करेंगे जरूर. All right, guys. So thank you so much. I'm glad that you are with me, and I'm glad that there are 257 people registered today, and 257 people are going to take action today. I'm really happy. I'm excited. All right, let's get going. Okay, let me ask you this. Is it really time management? Actually, it is not time management. टाइम तो लिमिटेड रिसोर्स है यार. सबके लाइफ में इतना ही आना है, उससे ज्यादा नहीं होगा. आपकी जिंदगी में 24 घंटे दिन में होते उतने ही होंगे, मेरी जिंदगी में भी उतने ही है, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकते. ओके, नाउ another fact with time is that it will continue to go away from your hands. निकलते जाएगा वो. There is nothing you and I can do to stop time. The only thing that we actually can do is to manage ourselves in such a way
that we make the most out of the time that is available with us. And ये जो आगे का सेशन है ना, it is just to change your mindset, to change your attitude towards time. Okay, we're going to do that, only that. Now let us look at the things that need our time every day. Very quickly share in the chat box. आप अपना टाइम कहां पे देते हो नॉर्मल? कहां पे जाता है आपका टाइम डेली बेसिस पे? सिंपल क्वेश्चन, बी ऑनेस्ट. Ashwini says social media. Okay, that's one aspect. Where else, Ashwini? Studying and sketching. Bhavna, I really like that. You spend your time studying and sketching. Piyush says mobile surfing. Social media again. But I'll tell you guys, आपकी जिंदगी में 4 चीजें ऐसी हैं कि जिनको आपका टाइम मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए. Okay, जैसे your mind. Okay, then comes your body. Mind मतलब ये brain को अपना टाइम मिलना ही चाहिए. Then comes your body. Okay, physical body. Then comes social life. Social life में 3 एस्पेक्ट है, friends, family, relatives. तीनों बहुत जरूरी है. And finally your creativity or your profession. Okay. Now here is the funny thing. Okay, all of you listen to me very carefully. This is very important. All right, this is very important. Your topmost priority is mind. Okay. Your second important priority is your body. Your third priority is friends, family, and relatives. Or actually, I'll put it this way: family, relatives, and friends. You decide the order, it doesn't matter. And then comes, finally, the last priority is your profession or your creativity. Now you would wonder, ये साला प्रोफेशन को हमने लीस्ट प्रायोरिटी क्यों दिया है? And let me ask you this: how many of you give the most importance, or rather how many of you give the top priority to your profession? होता है आपके लाइफ में? काम सबसे पहले आता है. भाई, भाभी, माँ, पिताजी, बहन, जीजा, और कौन है, दोस्त, ये सब बाद में आते हैं. Right? Isn't that true? But why am I saying this? That your mind has to be top priority and your profession, your career has to be the last priority. Sorry. I'll tell you why. See, your mind is your top priority, but it needs only 5 minutes in a day. Your body is your second priority, but it needs only 15 minutes a day. And your social life is your third priority, but it needs only 1 to 1.5 hours a day. And your least priority is your profession, but you can give it 8 to 10 hours also. That's the funny thing. Are you getting this? Your top priority is your mind, but you will give only 5 minutes to it. Your second important thing is your body, but you give only 15 minutes to it. I'm telling you, you only give 15 minutes to it. Your social life, friends, family, and relatives is your third important thing in life, and you give only 1.5 hours to it, not more than that. चलेगा. And creativity, तुम्हारे प्रोफेशन के लिए 8 घंटे देना कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका रीजन मैं बताता हूं आपको ये क्यों करना है. I'll ask you a question. How many of you had a fight with your mother, with your father, with your mother-in-law, father-in-law, husband, brother, faculty, friend? ऐसा हुआ है किसी के साथ? झगड़ा किए हो कभी लाइफ में? झगड़ा तो किए हैं भाई, गारंटीड किए हैं. हुआ है ऐसे? और अपना सबसे फेवरेट इंसान तो कौन सा है? अपनी माँ. माँ के साथ बहुत झगड़ते हैं नहीं?
वेरी ट्रू ध्रुव, वेरी ट्रू शान। माँ के साथ बहुत झगड़ते हैं। एंड आई टेल यू व्हाट गाइस, इट्स नॉट कि एट योर एज यू आर फाइटिंग विथ योर मॉम। आई फाइट विथ माई मॉम एवरी डे, not really every day, but yeah, every week at least we have our fight. She's like our, ये क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सिंग के लिए वो बैग यूज करते हैं ना, सैंड बैग, धप 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 धप, अपना झगड़ा चालू ही रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, दिमाग सटक जाता है। दिमाग का मैंने कहा था दही हो जाता है, दही, योर ब्रेन गेट्स कर्डल्ड, एंड देन व्हाट हैपेंस इज यू आर नॉट एबल टू फोकस, इट्स गॉन। यू स्पेंड नेक्स्ट 2 days फीलिंग बैड अबाउट इट। यार मैंने अपनी माँ के साथ झगड़ा किया, मैंने अपने पिताजी के साथ झगड़ा किया, मैंने अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा किया, मैंने अपने वाइफ के साथ झगड़ा किया। ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो लोग, मैंने तो ये सही कहा था, राइट? मैं तो अपनी छोटी बच्ची के साथ झगड़ता हूं यार, उसको तो झगड़ा क्या है वो भी नहीं पता चलता, वो तो 3 साल के, मैं उसके साथ झगड़ता हूं। वो बात अलग है, मुझे उसमें बहुत मजा आता है, जानबूझ के झगड़ता हूं। लेकिन जो बड़ों के साथ झगड़े होते हैं, उसके बाद थोड़ा ना अशांति फैल जाती है दिमाग में। हुआ है आपके साथ ये? And you know why that happens? If your mind is not focused, no matter if you have a good body, no matter if you have great relationship with your friends or family or relative, no matter if you're doing phenomenally well in your profession, you will not be able to focus. That day onwards, your productivity goes down. सिंपल चीज बोलता हूं, किसी के साथ अगर झगड़ा अवॉइड करना है, एक सेंटेंस बोल दो, बहुत गोल्डन सेंटेंस है वो, और वो सेंटेंस ये है, लुक, मैं जो तुम कह रहे हो उसके साथ सहमत नहीं हूं, लेकिन जो तुम कह रहे हो उसमें मैं ध्यान दूंगा और सोचूंगा उसके बारे में। खत्म, नो झगड़ा आगे। इसके वेरिएशंस है इधर उधर, डिपेंडिंग ऑन किसके साथ झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़े वेरिएशन है, वो चेंज कर लो। द पॉइंट इज, यू टेल दैट पर्सन, आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू, आई लव यू, ओके, आई डोंट अग्री विथ यू, but that doesn't mean that I have to fight with you. Right? Will you do this? Why this is important? It gives your mind that focus that it needs. Now, another thing that you have to do for your mind is meditation. और वो मेडिटेशन में ऐसा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बता रहा हूं। ऑल ऑफ यू डू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपको पता है, सब ब्रीद करते हैं, सांस तो लेते ही लेना ही पड़ता है। सिंपल सा एक्सरसाइज है, 2 मिनट में बता देता हूं क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, चेयर पे बैठिए, कोई भी फ्लैट सरफेस पे बैठिए, डोंट सिट ऑन अ काउच विच इज सॉफ्ट, ऐसे होके नहीं बैठना है, एकदम स्पाइन स्ट्रेट, सिट ऑन अ फ्लैट प्लेटफॉर्म, या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा चलेगा। योर नीज शुड बी 90 degrees if you are sitting in a chair, folded if you are sitting on the ground. Okay? आपकी स्पाइन जो है, बैकबोन स्ट्रेट, okay? Look up straight here, ऐसे नहीं, डोंट डू दैट, स्ट्रेट आई लेवल। उसके बाद आंख बंद करनी है और डीप ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, आई जस्ट शो इट टू यू वेरी क्विकली। सो क्लोज योर आईज एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, होल्ड इट देयर, 1 2, रिलीज, होल्ड इट डाउन देयर, 1 2, इन, होल्ड, ये करना है। और दलाई लामा जो है ना, दलाई लामा का आपने नाम सुना है, द फिनोमिनल पर्सन। आई टेल यू हिज कॉन्सेप्ट, व्हाट ही सेज इज, ये जो दिमाग है ना, एक बंदर है, बंदर, उसको हर जगह पे हाथ मार रहे हैं, ये करना है, वो करना है, इस पे ध्यान देना है, इधर करना है, ये करना है, वह उसका कंटिन्यूअसली वो चालू रहता है, उसको कुछ ना कुछ तो करना रहता है दिमाग को। तो जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, तो हम दिमाग को क्या बोलेंगे, देख बंदर, सांस काउंट कर, सांस पे ध्यान दे, यू नो, फोकस ऑन योर ब्रेथ, दैट ऑक्सीजन विच इज गोइंग इन एंड कमिंग आउट। व्हाई शुड यू डू दैट? देयर आर 2 रीजंस, एक फिलोसॉफिकल है और एक प्रैक्टिकल है। जानने 2 रीजंस, जानने आपको 2 रीजंस क्या है? वेरी क्विकली इन द चैट बॉक्स। Okay, fantastic. So I'll tell you what those 2 reasons are. The philosophical reason is, यार सीधी सी बात है, मैं ऑक्सीजन की वजह से जिंदा हूं, जिस चीज की वजह से मैं जिंदा हूं
उस पे मैं क्या 5 मिनट के लिए ध्यान दे सकता हूं? 5 मिनट के लिए? वरना तो मैं फालतू में इंस्टाग्राम पे कोई तो इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखते बैठता हूं, फालतू में मैं पबजी पे ध्यान देते रहता हूं। उसमें से अगर 5 मिनट निकालूं और सिर्फ जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, उसकी तरफ ध्यान दूं, ये फिलोसॉफिकल रीजन है। ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी? ये अपना हार्ट, ये अपना लंग्स, इस पे ध्यान देना है। ध्यान देना है मतलब क्या करना है? सुनना है वो आवाज सुननी है बस। ब्यूटिफुल, दैट्स म्यूजिक, आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दिस, राइट? That's the philosophical reason. And the practical reason, this is more like a medical reason. You cannot focus on two things at a time. At a time, आप दो चीजों पे फोकस नहीं कर सकते. Rajiv, very true. Divert your mind and focus it on breathing. So what you do is you tell your brain, भाई अब तू काउंटिंग कर. एक बार काउंटिंग शुरू हो गया ना, तो it will take a lot of effort to go to a different thought. That's the practical scientific reason. The philosophical reason is oxygen. It's the life because of which we live. Now, what I want you guys to do is, I don't see all of you wherever you are, but I trust you because you're the future of this country. You will do this exercise for 30 seconds. Okay? I'm going to count 30 seconds and then I'll ask you to start. I'll ask you to stop. Okay? All of you with me? This is what you have to do. Wherever you are, just sit with your spine straight. आपका backbone सीधा होना चाहिए. Look straight. Forget the camera. Forget Facebook. Forget everything. Just listen to what I'm saying. Look straight and then close your eyes. Okay. Once you close your eyes, keep breathing normally until I ask you to start breathing deep. Okay. All right. Start breathing normally. 1, 2, 3. Inhale. Hold. Exhale. Keep doing this. I'll ask you to stop. You can stop, guys. Open your eyes very gradually. What did you feel? How was it? How was it? क्या फीलिंग थी तभी? Calm, feeling refreshed, relaxed. It was very relaxing, right? 30 seconds can do that magic. Imagine 5 minutes, what will it do for you? Imagine what 5 minutes can do. That's the power of meditation. Can you give me, forget me, can you give yourself 5 minutes every day to do this exercise? पहले शायद difficult होगा. Okay, you might not be able to do it for 5 minutes. Start with 30 seconds. Over maybe 2 months, आप 5 मिनट तक पहुंच जाओगे. ठीक है? कन्हैया से कोई फर्क नहीं है. ठीक है यार, नुकसान तो नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, नुकसान तो नहीं होगा, right? कर लो, right? The second thing that you will do is for your body. 15 मिनट की वर्कआउट करनी है. वर्कआउट मतलब क्या? जिम में जाके बॉडी बनाने की वाली वर्कआउट नहीं कह रहा हूं. वो करनी है, वो बाद में कर लीजिए. 15 मिनट जो मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूं वो सिंपल है. सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, आपने शायद सुने होंगे. सूर्य नमस्कार अगर आपको नहीं पता है, जंपिंग जैक्स, वो वाला जो एक्सरसाइज है, राइट? नाउ आई टेल यू, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 hour वी हैव बीन सिटिंग हियर. हम लोग में से किसी ने भी हाथ ऐसे ऊपर नहीं किया है, राइट? नन ऑफ अस हैव डन दैट. नाउ आई वांट यू टू डू इट राइट नाउ. पुट योर हैंड्स अप एंड स्ट्रेच वेरी क्विकली. यहां पे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा. करिए थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न, जहां पे बैठे हो वहीं पे. बॉडी बहुत अजीब चीज है यार, बहुत अजीब चीज है.
it responds immediately, right? Feels good after stretching. You've been sitting in one place for 1 hour, 1 घंटे से एक ही जगह पे बैठे हो, थोड़ा सा कुछ कर लिया, मतलब टाइम पास वाली मूवमेंट्स भी कर ली तो थोड़ा अच्छा लगता है। 15 मिनट अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, आप जॉगिंग जाते हो, you go in a park where there is lot of greenery, it would be fabulous. स्पॉट जॉगिंग कर लो, टेरेस पे जाइए, वहां पे थोड़े पुशअप्स कीजिए, राइट, क्रंचेस कीजिए, कुछ जो करना है कीजिए। जिम में जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, जिम में जो एक्सरसाइज करनी है वो बाद में कीजिए। ये 15 मिनट बस, योर बॉडी विल बी वेरी हैप्पी। डू दैट। देन कम सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। I cannot emphasize the importance of friends in my life. यार दोस्त वो चीज है ना जिन पे हम बहुत अत्याचार करते हैं और फिर भी वो हमारी सारी बातें मानते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, राइट? यू कैन कॉल देम अप एट 3 o'clock इन द नाइट, यार जिंदगी की बैंड बज रही है, थोड़ी हेल्प चाहिए। सामने से क्या आता है, अबे चुप, सो जा, बकर कर रहा है, कल सुबह बात करेंगे। दैट इज फार मोर रिलैक्सिंग देन अ मोटिवेशनल स्पीच। जब दोस्त दो गाली देते हैं ना तो सुकून, ठंडक आती है कलेजे को, राइट? आती है, नहीं आती है? इतनी ठंडक तो यार मतलब बर्फ में भी बैठ जाओ तो नहीं आएगी। और वही दोस्त जब आपको कोई लाइफ में जरूरत हो, पर्सनल हेल्प, फिजिकल हेल्प, मेंटल हेल्प, they will come to your rescue. That's friendship. Don't take your friends for granted. Don't do that. Spend time with them. Call them up. Call them up at least once a week. Your best friends. I'm not asking you to send a message to your 1,000 friends on Facebook. That's ridiculous. You have your inner circle of, let's say, 5 to 10 friends. That's it. Just call them up. What's happening? How are you? Okay, spend time with them. Same thing with relatives. अरे भले ही आपकी मौसी आपके शादी के पीछे पड़ी है, लेकिन है तो सही मौसी। Okay? जब भी बच्चे थे हम, तभी उन्होंने ही तो अपने को यार मतलब पाला है, उन्होंने अपने साथ बहुत मजाक मस्ती की है, अपने लिए खाना वाना बनाया है, लाए हैं, बहुत टाइम पास किया है, राइट? स्पेंड टाइम विद देम। नाना नानी, दादा दादी, उनके साथ टाइम बिताइए, मम्मी डैडी, उनके साथ टाइम बिताइए, right? So now what you could do is very quickly set up a, देखिए, because of the pandemic we haven't met any of our relatives, our family or whatever. Take up the initiative and set up a Zoom call for everyone. Arrange an online virtual gaming thing for your family. Take up that initiative. They'll be really happy for you, right? Do that. And finally, creativity, which is your profession. So I'm going to talk more about that in the next few slides. Let's go over there, okay? But before that, I want to show you what kills time. And what kills time is this, social media. 3 घंटे तो हम सोशल मीडिया पे ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कोई तो इंस्टाग्रामर ने कोई तो भारी वीडियो डाल दिया और हम वो देख रहे हैं, यार टॉप चीज है ये, मुझे भी यही चाहिए। Do you know influencers have a very, very harsh lifestyle? How many of you follow K-pop? कोई है यहाँ पे K-pop follow करने वाला? Is there anyone who follows K-pop या Japanese anime? I know there are a lot of people who follow them. So come on, open up. That's interesting. None of you? Okay, that's very good. If you're following, overthinking is one thing, so which I call as daydreaming. If you're following those Instagrammers or Facebook influencers, let me tell you that they have a very harsh life. What you see is 1% उनकी जिंदगी का 1%, और उनकी जिंदगी का 99% is harsh, is difficult. You don't want that life. मुझे तो एक किस्सा ऐसे पता है कि एक लड़का, yes Anya, there you go, Korean K-pop. There is a documentary on K-pop singers.
Sania, I would strongly recommend that you watch that documentary, and that is when you'll understand कि K-pop जो singers हैं, उनकी life बहुत बेकार है, बहुत बेकार है. You'll stop following that. Korean singers है कन्हैया. Don't worry. If you don't know, that's good. You're not missing anything. Please मत देखिए. I'm sorry that I introduced it to you, but don't follow it. It's a waste of time. Daydreaming. यार मेरे को भी ना फरारी चाहिए यार, अपना भी एक बंगला होगा बहुत बड़ा, अरे झूमर लगा होगा मस्त में बड़ा वाला, मैंने भी चार्टर्ड एयरप्लेन में घूमना है. अबे तो दिन में ख्वाब क्यों देख रहे हो मेरे भाई? दिन में ख्वाब मत देखो. ख्वाब ऐसे होने चाहिए कि जो रात को भी सोने ना दे. दिन में देखे जाने वाले ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि दिन में ख्वाबों की तरफ अपने को काम करना होता है. आर यू विथ मी? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो स्टॉप डे ड्रीमिंग. नेक्स्ट इज कॉफी ब्रेक्स. हर 2 मिनट के बाद चाय कॉफी चाहिए, हर 2 मिनट के बाद कॉफी चाहिए. काय को? आई एम गोइंग टू शो यू अ मैथ अराउंड कॉफी एंड विल कम टू दैट वेरी सून. अनप्लान्ड विजिट्स बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. पैंडेमिक के पहले बहुत होता था, चल यार उसके घर पे जाके आते. अबे पूछ तो लो उसको एक बार, क्या कर रहा है वो? हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के बीच में होगा. Just give them a call, check if they're available. It's not Saturday, Sunday. Monday through Friday, do not do unplanned visits. Call up the person and check if they're available. क्या बुराई है उसमें? सरप्राइज वर्प्राइज सैटरडे संडे को रखना, वीकेंड्स को रखना. और सरप्राइज किसी का टाइम वेस्ट करने में नहीं है यार. Pradeep, you have asked a very deep question. We can discuss it later. This is a very deep philosophical question. If you ask me on a philosophical level, I think it is cyclic, but we live in a linear way. We'll talk about that later, Pradeep. Okay, stop doing that. Now, let me give you a calculation around chai coffee. So, मैं जिस college में पढ़ा था, this was 5 years ago. मैं बैठता था 7th floor पे, और कैंटीन था ग्राउंड फ्लोर पे. So let's say if I have a thought of having a tea, right? तो उसमें कम से कम 2-3 मिनट गए. फिर मैं मेरे कलीग को पूछता था, चल यार जाते हैं, उसके 2-3 मिनट. 6-7 मिनट तो हमको ये हमारे ऑफिस से उठकर एलिवेटर तक, लिफ्ट तक जाने में 6-7 मिनट लग जाते थे. फिर लिफ्ट से कैंटीन की तरफ जाने में 5-6 मिनट लग गए. मतलब 12-13 मिनट, मान लो 15 मिनट तो कैंटीन में पहुंचने लग गए. उसके बाद बैठे शांति से, चाय ऑर्डर करी, चाय आने में 5 मिनट लग गए, या कभी 3 मिनट लग गए, right? So roughly 20 minutes gone by the time tea comes on my table. Okay? After that I drink tea, and then 4 यार बैठे हैं तो गप्पे शप्पे तो होने हैं, उसमें 15 मिनट गए, 35 मिनट ऐवे ही निकल गए. उसके बाद वहां से निकले, फिर ऑफिस में जाके बैठे, 10 मिनट गए, 45 मिनट एक चाय पे निकल गए. Does that happen with you? Feel free to answer. Faculty, anyone who is working professionally, have you experienced this? Right? Now, when I was in the US, जब मैं अपनी MS और PhD वहां पे कर रहा था, मैं जिस लैब में काम करता था, जिस लैब में मेरा काम चलता था, वहां पे एक माइक्रोवेव और एक कॉफी मशीन थी. छोटी कॉफी ब्रूइंग मशीन होती है ना, इतनी सी छोटी सी. बस that's it. It was a very small coffee machine. It was in the lab. हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. Now, why is this important? I'll tell you. So 45 minutes per person. ये एक सुबह की चाय, फिर एक शाम की चाय, मतलब 1.5 घंटा हो गया. एक इंसान का सिर्फ चाय के आगे पीछे 1.5 घंटा है. Okay. Now, there would be at least 50 to 100 people working in my college. That is 100 hours every day, multiplied with 365 days. Boom. I proposed the same thing to my college management, and for some time, they actually accepted it. And what they did was, in some cases, they allowed us to have our coffee machines. And in some cases, they allowed the canteen guy to send tea to the lab. Do you know what that did? That brought down the tea time to only the tea drinking time.
which is 15 minutes. And that is exactly the time that a human requires to refresh. 2 घंटे आप काम करते हो, 1.5 घंटे काम करते हो, आपको 15 मिनट का ब्रेक जरूरी है, ये मेडिकली प्रूवन है. ये जो बाकी का टाइम है ना, चल के जाना, उधर लिफ्ट से नीचे जाना, फिर चाय ऑर्डर करना, इसमें और 15 से 20 मिनट unnecessary जा रहे हैं. I strongly recommend the management that whenever the college opens up, or management or whichever workplace you are in right now, आप अपने ऑफिस में जहां पे भी हो, आपके मैनेजमेंट को प्लीज ये बोलिए कि 5,000 रुपए का एक कॉफी मशीन हर फ्लोर पे डाल दीजिए, फैकल्टी और जो भी है उनके लिए. It will save tremendous amount of time for the entire institute. United States of America loses close to $300 billion to distraction. Distraction being coffee breaks, social media, and other unplanned meetings. This is a fact. Okay. Work on it. Now, how do you create time? This is beautiful, guys. How do you create time? There are 2 ways you can do that. The first way is wake up at 4:55 a.m. How many of you wake up at 8 a.m. or after that? What time do you guys wake up? Come on, people. Give me the time that you wake up. I'm looking at the chat box. I'm waiting for some responses. 5 p.m. I think you mean 5 a.m. Ashwani doesn't want even to respond. Like, हाथ ऊपर कर दे भाई, हम तो 10 बजे उठते हैं. Muskan says after 9, Saurabh says after 8, 7. Guys, I want you to do a simple calculation, all right? I want you to do a simple calculation. If you wake up at 5 o'clock, then let's say Muskan is waking up at 9. Sandeep, fantastic. Huh? 4:50 is amazing. Shreyasi, amazing. If you are waking up at 9 and you start waking up at 5, you're gaining 4 hours every day. Multiply it with 300. That is how many hours? 1,200 hours, roughly, right? Now divide 1,200 hours by 8. Whatever time you guys are waking up, if you start waking up at 5, if you're waking up before that, wonderful, keep doing that. If you're waking up at 5, imagine the amount of time that you will have to get things done. This is how you create time. There is no other way. There is no other way. If you're waking up at 5 o'clock, kudos to you. Pat yourself. That's on my behalf. If you're waking up at 8 or 9 o'clock, tomorrow onwards, start waking up at 5 o'clock. And I'll tell you what to do after that 5 o'clock. Okay. Another thing that you're going to do is cut the crap. I call this cut the crap algorithm. Okay. We'll talk about that later. Let me tell you what you will do in the morning. And I call this the mantra for powerful mornings. This is, ये जो मंत्र है ना, ये बहुत अमेजिंग है. कोई आपको उच्चारण नहीं करना है, ये 3 चीजें करनी है. आप मेडिटेट कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है. 15 नहीं, 5 मिनट के लिए कीजिए. 15 मिनट जिस दिन करोगे ना, आप तोप बन जाओगे, दलाई लामा बन जाओगे आप. वो नहीं पॉसिबल है. दलाई लामा एक ही है, आपको दलाई लामा नहीं बनना. आप 5 मिनट कर लीजिए मेडिटेशन. दैट विल बी बिग, ह्यूज. वर्कआउट फॉर 15 मिनट्स, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, स्पॉट जॉगिंग, जंपिंग जैक्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू. देखो, आप जब भी वर्कआउट करते हो ना, जब भी स्वेट निकलता है, क्या होता है पता है? योर बॉडी रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एंडोर्फिन. Endorphins are those hormones which make you feel fantastic, which make you feel good about yourself. Okay, so do that at workout. Workout इतना करोगे थोड़ा sweat निकले, थोड़ा पसीना आए, ठीक है? Do that and educate yourself for 15 minutes or maybe half an hour, 45 minutes. So 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको ये 3 चीजें करनी है. 5 मिनट का मेडिटेशन, 15 मिनट का वर्कआउट, हो गया 20 मिनट, 40 मिनट का एजुकेशन. एजुकेशन में 3 चीजें आपको करनी है. फर्स्ट इज, ईदर यू कैन स्टार्ट राइटिंग, राइट योर थॉट्स. कल का दिन कैसा रहा, लाइफ में क्या करना है, इलॉन मस्क के बारे में लिखिए. आपको जो लिखना है, समथिंग दैट इज वेरी क्रिएटिव इन नेचर. किसी को क्रिटिसाइज करने वाला काम मत लिखिए, किसी को गाली देने वाला काम मत लिखिए, कुछ बुरा सोचने वाला मत लिखिए. थिंक समथिंग वेरी क्रिएटिव. यार मुझे ये बनाना है, ये मैं कैसे बनाऊंगा, इसको ये मशीन लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, डांस सीखूंगा, ऐसे वो लिखिए. Another thing that you can do is read.
Read some fantastic books. Okay, probably something like Shiv Khera या महात्रिया रा का पढ़िए, संदीप महेश्वरी का पढ़िए, इन लोगों की बुक्स पढ़िए. I'm going to write a book very soon. Read my book, all right? So you'd feel good about it. Now, what this is going to do is, I'll tell you what it does. Or watch videos, by the way. Okay, watch videos. Just for example, I think this is on Facebook Live. It's going to go on the Facebook page of Vision College. Right. In the morning, you can just open up this particular video and start watching it. Now, what this does is, अपने दिमाग में ना, brain में इधर, there are something called neurons. Have you heard of neurons? Have you heard of neurons? Right. Now, neurons are information highway. Okay, this is where information flows in your brain. जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्खी कभी काटती है अपने को, इमीडिएटली हाथ ऐसे आ जाता है, फटाक से हाथ यहाँ पे आ जाता है. That's a reflex reaction. It takes less than a second or two. But what is happening is your eyes, okay, or rather your skin gives that itching sensation. वो sensation पहले जाता है, right? And then you have your eyes which look at the mosquito, and then your brain decides that I have to squat it, and then you do that. All of this information going to the brain goes through those neurons. Now, here's the beauty of neurons. Neurons can give you the feeling of being young, even if you are 40 years old, 50 years old, 60 years old, 80 years old. It doesn't matter. But for that, you have to get into a habit of educating yourself at your age. आप जिस उम्र में हो तभी से लेकर आगे तक आप बुक्स पढ़िए, आप कुछ मोटिवेशनल देखिए, आप कुछ पेंटिंग कीजिए, आप कोई क्राफ्ट कीजिए, आप कोई गाना सीखिए, डांसिंग सीखिए. इससे क्या होता है, नए न्यूरॉन्स बनते जाते हैं. जैसे पुराने न्यूरॉन्स निकलते जाते हैं, नए उनको रिप्लेस करते हैं. अगर आप एजुकेशन खुद का नहीं करते हो तो पुराने न्यूरॉन्स तो निकल रहे हैं, नए बन ही नहीं रहे अच्छे स्पीड से. So you start becoming an old person. And when I say old in a negative way, I mean a person who is not evolving. I know a person who is close to 95 years old, and that person reads 4 hours every day. He works in a farm. खेती करते हैं और वो रोज 4 से 5 घंटे रोज. और उनके साथ बात करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या आदमी है ये, क्या नहीं पता इनको, सब पता है. कोल्ड वॉर से वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक जो भी हो रहा है पैंडेमिक का, उनको सब पता है. By age he is 97 years old, 95 years old, but by his brain and his heart he is a young guy of 20 years age. Isn't that mind blowing? I want you to follow that, and you have to give only 40 minutes every day for that, not 4 hours. Just 40 minutes. Can you guys do that? कर सकते हो अपने लिए ये, कर सकते हो अपने देश के लिए ये. मैं चाहता हूं आप ये करो क्योंकि ये सब मेरे बेटी के लिए होने वाला है. मैं स्वार्थी हूं. Will you do this? Guys, this is $1 million formula. This 1 hour, if you do daily, even for 30 days, I can assure you that you will have a lot of clarity in your life. Lot of clarity. A lot of clarity. That's my personal promise. Okay. Now, I'll show you cut the crap algorithm. This is very important. Okay. This is very important thing. Please pay close attention. Pay very close attention. In your life, you're going to have 100 things to do. ये करना है, वो करना है, ये फलाना टिमका, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी. Okay, but you will classify them according to this quadrant. Whatever is important and urgent, you will do it right now. Forget the consequences. You will do it right now, and ideally, you will do it in the early morning hours. And I'll tell you the reason also why you should do that later. If you miss it, ask me this as a question. If it is important and urgent, you do it right now. You don't think. Plain and simple. No procrastination. होता ही नहीं है वो. उसके चाहे जो consequences हो. Okay? उनके साथ कैसे deal करना है बाद में बताऊंगा. If it is not important but it is urgent, ask someone else to do it. Delegate. Okay? If it is important but it is not urgent, you put it on a calendar. Do it later whenever it needs to be done. And if it is not important and is not urgent, delete it.
For example, Instagram. For example, PUBG. For example, what is that? TikTok, Takmak, Maktak, whatever that is. Stop doing that. You want breaks? Take calculated breaks, do a quick exercise, read something motivational, make a quick tea, make quick Maggie, get refreshed. Clean up your house in those 15 minutes, whatever you can. Okay. Go feed a hungry person, do some charity in those 15 minutes, do something that helps your mind to grow. Not social media. That's not a break. Do you understand this algorithm? Cut the crap algorithm. Do, defer, delegate, delete. Important, not important, urgent, not urgent. Life में सब चीजें ऐसे ही classify करनी है. Make sense? Fantastic. Now, how do you make most out of the time that you already have? Okay, 3 things. One is chunking. Do not create a timetable where you have slots of 15 minutes or half an hour or like that. Create time slots of 1 hour. Dhruv, very true. You have to have gratitude. In fact, that is what you can do during meditation. Gratitude is very important. I'm not going in the details of that 1 hour, but yes, you're absolutely spot on correct. Gratitude. Thank for what you have. Thank the Almighty for what you already have. Okay, it's very important. Chunking is creating time chunks of 1 hour. 1 hour में 45 minutes is absolutely focused work. 15 minutes is rejuvenating break. 45 मिनट के लिए तोड़ काम कीजिए, तोड़ काम, नो डिस्ट्रैक्शन. ये मोबाइल फोन वगैरह सब हटा के फेंक दीजिए. आप अपनी किताब और एक क्रोम का टैब, एक लैपटॉप पे एक क्रोम का टैब, one tab only, not many tabs. Focused work. And guys, I'll tell you, you'll see magic happening. You'll see magic happening. Okay. Second thing is single tasking. मैंने आपसे फॉर्म भरवा के लिया था, आपने काफी लोगों ने लिखा है मल्टीटास्किंग करना है. मल्टीटास्किंग होता नहीं, करने की सोचिए मत. मत सोचिए. It's not possible. Okay. मल्टीटास्किंग नहीं होता. कंप्यूटर्स भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते. दुनिया का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग नहीं करता, वो टाइम शेयरिंग करता है. इट्स डिफरेंट. यू कैन डू पैरेलल टास्किंग. पैरेलल टास्किंग का एग्जांपल बताऊं, वॉशिंग मशीन चालू कर दिया, 2 मिनट में गए, वॉशिंग मशीन चालू कर दिया कपड़ों के लिए, आके अपना काम शुरू कर दिया, आधे घंटा वो काम करते रहेगा. दैट इज पैरेलल टास्किंग. देयर इज नथिंग कॉल्ड मल्टीटास्किंग. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके. देयर इज स्विच टास्किंग, व्हिच मींस एक काम करते करते वो रोक दो, दूसरा काम शुरू करो, वो बंद कर दो, तीसरा काम शुरू करो, फिर पहले काम पे आओ. लेकिन स्विच टास्किंग में एफिशिएंसी कम होती है. ओके. स्विच टास्किंग में एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है. सो डोंट इवन ट्राई टू डू दैट. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सिंगल टास्किंग, 45 मिनट्स, वन एक्टिविटी. आपकी कोई बड़ी असाइनमेंट है, बड़ी एग्जाम आ रही है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, 45 मिनट्स उसी को दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है. इफ यू आर एबल टू अचीव दिस, success is on the way to your home. All right. Finally, prioritizing. Prioritize your life. You don't have to please everyone. You cannot please everyone. It's not going to work. But I can tell you one thing. Once you succeed, everyone will be pleased. Some will be jealous. Until you succeed, you cannot please everyone. Once you succeed, most of your loved ones will automatically be pleased. Some of your acquaintances will be jealous. आपको लाइफ में सक्सीड करना है, आप सबको प्लीज नहीं कर सकते, आप सबको खुश नहीं रख सकते. लेकिन जब आप सक्सेसफुल होंगे, आपके सारे दोस्त, आपकी सारी फैमिली आपसे खुश होगी. राइट. सो प्रायोरिटाइज. स्टार्ट सेइंग नो. एंड देयर इज नो सीक्रेट वे टू दैट. It's only that you just say no, I won't be able to do it. That's it. Great. Guys, we are at the end, almost at the end of this session. Ma'am, there is a request for you. I will share a feedback link with you if that's okay. Can you share it with everyone? Can we put it on the chat right now?
Yes, sir, sure, we can, sir. Okay, give me a minute. Yes, sure, sir. Meanwhile, I would like to request all the students, if they are having any queries or Yes. if they want to ask anything directly with the sir, they can write their queries in the chat box. Just a minute, guys. It's coming up. Feel free to ask your questions. So those students have actively participated throughout the session and they replied each and every question asked by you. And definitely they have learned many things. They have learned we need to create time. And it's not a rocket science, it's an art. And students need to identify this, how they can be more effective and efficient while taking these tips delivered by you, sir. And also, time is a resource. We need to understand this concept, and we need to we need to set our priorities. So that was amazing, sir. And after this workshop, I would again, on behalf of mine, also would like to request all the students, invest time in yourself, because whatever we are teaching in college or whatever session we are arranging for you people, the objective is please invest time for yourself. Need it's a time to groom yourself, because सिर्फ प्लेटफॉर्म है, हम सब चीज अरेंज कर सकते हैं, but the first and foremost thing is you should take initiative in it, you should take active participation in it. And definitely sir, every student has taken participation actively, Yes. sir. And so we are having few questions also here. Okay, let me see. Ma'am, I have sent the link to you on the chat. Okay. Can you please share it with the group? I am not able to share it on this. Okay, Pradeep Okay, ji. definitely sir. Yeah, I see the first question coming in for at my end. Is time cyclic or linear? This is a very philosophical question, Pradeep ji. Personally, मुझे ऐसा लगता है कि it is cyclic. We are on, or if I were to draw it, it is a circle, right? But it's such a huge circle that मेरी जिंदगी एक line ही है. Okay, मेरी जिंदगी एक line ही है मेरे लिए. Our lifetime will be like a straight line because we are sitting on a very huge circle. Makes sense? If you look at for example, our planet Earth, right? It is spherical. But जब मैं पूना में हूं, मुझे सब फ्लैट ही दिख रहा है, right? So I would say that it is, yes, cyclic. And it's a very philosophical discussion, by the way, and this is my personal opinion that it is cyclic. Okay, we can discuss this later on, but that's my justification. I hope I have answered that. I'll go on to the next question. Samarth, when did I realize about time management? Okay. All right. So I'll tell you when I realized about time management. It was 15 December 2020. 15 December 2020. Okay. I've been doing activities, to-do list and everything, but time management as a science, I realized it on 15 December 2020. And I'll tell you what happened after that. उसके बाद आपको impact समझेगा. Between then and now, okay, I created my own website. मैंने खुद programming करके किया. I've read over 20 books in less than 3 months. I've written blogs worth 1 lakh words so far. Okay, those are getting published as we speak. I created a team of around 15 students. We did a fantastic job of going and reaching out to students, writing blogs, and a whole lot of things. Right now, some of you, or rather one of you, is my 1500th student. Okay, I've reached out to 1500 students so far. Okay, and I have roughly 20 paying clients. And I am still continuing with my existing business. And I'm also helping a friend of mine to promote her business. Okay. And until today, I was taking care of only my business and I was failing at it.
After I looked at time management as a science, boom, not only my business, someone else's business, reaching out to 1500 students, writing blogs, creating my own website, and now I'm also creating my own course, which I'll be launching very soon. And I also have 20 clients for time management. We have a 60-day challenge. They enroll, and I change their entire habits in the 60 days. Right? Now, this is what happens when you do time management. Okay, and time management coach is my third business. Okay? I hope I have answered your question, Samarth. Okay, fantastic question, Saurabh Singh. We need 3 things to do some task. It is decision, plan, and action. The question is how to manage these 3 things, or any effect on result if focus more on one thing. Okay, I'll answer the next question quickly. Aditi has asked where can we read your blogs. I'll share it with Anamika ma'am later, and then she can share it with the group. I'll let you know. All right, Saurabh. Sure, sir. So the deal is simple. These 3 things have to go hand in hand together. First, you have to decide what your goal is. Second, you have to decide that you want to achieve that goal. Once the decision is made, and assuming that you have a fantastic goal, right? Once the decision is made, you have to lay down the plan to reach that goal. Okay, I'll give you a simple example, a relatable example. यार ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा ना, मुझे चित्तौड़गढ़ आना है, ये मेरा गोल हो गया. ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चित्तौड़गढ़ आऊंगा और सौरभ से मिलूंगा, मैम से मिलूंगा, डॉक्टर साधना से मिलूंगा, इनसे सबसे मुझे मिलना है. ये मेरा गोल हो गया और ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये करूंगा. हाउ डू आई नो दैट? आई स्टार्ट क्रिएटिंग द प्लान. अच्छा, चित्तौड़गढ़ जाने के लिए मैं ट्रेन से चला जाऊं, फ्लाइट से जाऊं, कैसे जाऊं, कौन सी डेट को जाऊं, वहां पे वेदर क्या होता है, कितना खर्चा लगेगा, वहां पे जाके कहां पे रहूंगा, ये सारा मेरा प्लान बन गया. ठीक है, अब आई बात एग्जीक्यूशन की. अरे प्लेन का टिकट लेने गया, ओ 15,000 की टिकट है, अब क्या करें? एग्जीक्यूशन में डरने लगे. नहीं, तब मैं अपने आप को बताऊंगा यार मुझे चित्तौड़गढ़ जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई नीड टू मीट दी स्टूडेंट्स whom I have helped today. I have to see what their life is right now, and this is very important for me. सौरभ, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट चीज कुछ और होगी, आपका गोल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और होगा. मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं चित्तौड़गढ़ जाके सौरभ से मिलूं, मैं जानना चाहता हूं उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो मैं कहूंगा यार 15,000 जाने दो, आज नहीं है मैं कमा लूंगा, मैं अपने पेइंग क्लाइंट्स की फीस बढ़ा दूंगा, मैं किसी से लोन ले लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा. अभी एग्जीक्यूशन में डर 2 चीज का लगता है. एक तो फियर ऑफ फेलियर, अरे यार मैं चित्तौड़गढ़ पहुंचा ही नहीं तो फिर मेरे लोग क्या बोलेंगे, मेरे भाई बहन क्या बोलेंगे, मेरी बीवी क्या बोलेगी, मेरी भाभी क्या बोलेगी, मेरा जो भी है कौन क्या बोलेगा. अबे लोग क्या बोलेंगे, वो गाना सुना है आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. दैट इज सो ट्रू. लोगों का काम ही है बोलना. आप चाहे चित्तौड़गढ़ पहुंचो या ना पहुंचो, वो बोलने ही वाले हैं. आज तक मुझे लोग क्या बोल रहे थे, अबे तू चित्तौड़गढ़ नहीं गया, क्या देखा तूने जिंदगी में? और जिस दिन मैं बोलता हूं अरे मैं चित्तौड़गढ़ जाने का प्लान कर रहा हूं, पागल हो गया क्या, पैंडेमिक के बाद कौन जाएगा चित्तौड़गढ़? एंड वंस आई रीच चित्तौड़गढ़, पीपल स्टार्ट प्रेजिंग, चित्तौड़गढ़ पहुंच गया यार, ये क्या बहुत तोप चीज है यार, क्या इसने बहुत सही चीज कर दी. दैट इज व्हेन पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. Replace Chittorgarh with your goal. This is exactly what happens. So forget लोग क्या कहते हैं, उनको बोलने दो, उनका काम ही है बोलना, करना उनका काम ही है, करना अपना काम है, क्योंकि हमें आगे जाना है और आगे जाने का एक ही जरिया है, एक्शन, एग्जीक्यूशन. अभी इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी डर इस बात से, पहला डर है फियर ऑफ फेलियर, अगर गोल मिला ही नहीं तो क्या. ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला यार, नहीं मिले अच्छे मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं. मेरे जिंदगी में मैंने कभी डिस्टिंक्शन नहीं मिला था मुझे,
जब मैं यूएस गया, मेरा जीपीए 4 में से आई थिंक 3.8 या समथिंग, या 3.6 या 4.2 वगैरह कुछ था. इट वाज अ वेरी गुड जीपीए. आई डोंट इवन रिमेंबर. बट टुडे आई एम इन अ पोजीशन टू इंपैक्ट द लाइव्स ऑफ 20,000 स्टूडेंट्स. मैं यही सोचते रहा हूं, मुझे एसएससी में कितने मार्क्स थे, मुझे कॉलेज में कितने मार्क्स थे, कितनी केटी लगी थी. नहीं, इट वाज अ माइलस्टोन. जब मैं कॉलेज में था तब मेरे लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट थे, आज नहीं. मेक सेंस? सो डोंट वरी अबाउट दैट. Don't worry about failure. Okay. Another thing, many times people are afraid that they might succeed. मैं सक्सेसफुल हो गया तो यार सारा काम मेरे पे ही आएगा. इसका भी डर लगता है. हाँ, इसका भी डर होता है, कहीं मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी. ये होता है, ये प्रॉब्लमेटिक होता है. बट देन यू टेल योरसेल्फ इट्स ओके, आई वांट दैट, आई वांट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स ओके, आई लर्न हाउ टू डील विद इट. इट्स ओके. Yeah, Payal, I think you're right. The journey is equally important. The destination is absolutely important, but the journey is also important. Now, your willpower lets you execute. Do your most difficult task early in the morning when your willpower is high. रात को सोने से पहले आप बोलोगे मुझे असाइनमेंट सॉल्व करनी है, ना ना, नहीं होगा, नहीं होगा. कोशिश भी मत कीजिए. All right, I hope I have answered your question. मैम वो फीडबैक वाला Yes, sir, link definitely. Yes, share हो. I have shared that link. Yes, sir. Yes, sir. Among students, I have shared through our group, Okay. sir, on WhatsApp. Okay. 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 If there are no more questions, Yes, sir. We will call it a day. Yes, sir. Students are having n number of questions, sir. Uh, yes, sir. Exactly. That's what I was suggesting. Okay. The surprise element of goals. Hello. Can you all hear me? Yes. Okay. All right. So the surprise element. See, I told you earlier. I hope, Dr. Sadhana, do we have time now? Can we go on? Can I answer that one question? Yeah, yes. Okay, fantastic. So, guys, I told you, right, that your goals you won't be able to achieve. Only one person would be able to achieve that goal. There was someone who mentioned that he or she wants to become an IPS officer, right? Someone mentioned that. I don't remember the name. Sorry, I apologize for that. But that is the person who's actually going to become, who has a very good chance of becoming an IPS officer. And a lot of people, you said, I want to do a business, I want to be happy, I want to be successful, I want this, I want that, but none of you are going to get that. And the problem is that your goals were not specific. Your goals were not specific. What do you mean by happiness? Are you not happy today? I get extreme joy when I'm playing boxing with my 3-year-old daughter. That's amazing for me. I'm happy. So should I not do anything else? How do you define happiness? How do you define success? I define my success that this year, if I reach to 20,000 students, I would have succeeded. It's a very specific thing. Next year, I'll say I want to reach out to 2 lakh students. Are you getting me? Right? So the first thing is that your goals have to be specific, very specific. What is it that you want? The who, what, when, why of your goal should be answered. Who will achieve? What do you want to achieve? When will you achieve? Why will you achieve? So the way it is broken down is, first, it has to be specific. Second, it has to be measurable. You should be able to measure it using systems, methods that are available on the planet. I want to be happy. How do you measure that? Can you use a weighing scale to measure happiness? You cannot. Can you use a currency counter to measure happiness? You cannot. Okay? But if you say that I want to create a orphanage,
and I want to have 1,000 children over there, and I want to feed them, all right, and I want to do it at no cost to them. Is that a specific thing? Is that measurable? Excuse me. Yes, Dhruv, very true. It's different for all. You know, someone might say, I know a person who is in, I mean, I don't know personally, but she's a lady somewhere in Argentina or Cuba, and she has a sanctuary for dogs. And there are 1,500 dogs, stray dogs, which she brings from all over the world in that place, and she feeds them daily. She takes care of each one of them daily. She's not a millionaire. She's not a very rich person, but she's very happy. She's successful. Define your goal, make it specific, make it measurable. The third thing is it achievable? Okay. आप बोलोगे मुझे 100 करोड़ चाहिए एक साल में, हाँ? एक साल में 100 करोड़ चाहिए तो 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. 60 करोड़ है नहीं है, सो इट इज नॉट अचीवेबल. हाँ, 100 करोड़ मुझे चाहिए 20 साल के बाद या 10 साल के बाद, that is achievable. If you do a certain things, you can go to 100 crores in 10 years. And at your age, guys, you can go to 500 crores also in 20 years. No one can stop you from doing that if you do a certain right things. Right? So that is achievable. Then relevant. So specific, measurable, SM, okay, achievable, A, relevant. Is it relevant to you? Why should Vikram reach out to 20,000 students in 1 year? Why should Vikram do time coaching for a lot of people? Why is Vikram having paying clients for his time coaching? It is relevant for Vikram. मेरे को relevant है यार. मैं कुछ देखना चाहता हूं, कुछ change देखना चाहता हूं अपने country में. आपके लिए time coaching might not be relevant. Just because I am making a lot of money because of time coaching doesn't mean that Prakhar or Payal or Dhruv or Yatindra will do that. They won't be able to do that. Yatindra के लिए शायद कुछ और होगा. He might be interested in planting trees. It should be relevant to him, to her. And you have to identify this yourself. What is relevant to you? And finally, it has to be time bound. कब मिलेगा ये? मुझे 20,000 स्टूडेंट्स तक टाइम मैनेजमेंट का मैसेज लेके जाना है 31 दिसंबर 2021 को तक. इट इज टाइम बाउंड. मैं अपनी जिंदगी में 20,000 स्टूडेंट्स को मैसेज लेके जाऊंगा अगले 40 साल में, 50, आई डोंट नो, पॉसिबल कभी नहीं होगा. एंड द रीजन इज, सी, एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू आस्क द मैनेजमेंट, आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस, दिस इज माय एम. आई वांट यू टू गिव मी अ रेफरेंस टू समवन एल्स. Why am I asking for reference? Why am I asking for a reference of another college? Because I want to achieve 20,000 students this year, not next year. See, it automatically opens up avenues. आज मैं विजन कॉलेज तक कैसे पहुंचा हूं? बिकॉज मैंने लोगों को बहुत बोला है कि अरे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, 20,000 लोगों तक जाना है. Make sense? This is the secret of achieving your goals. Define whatever goal you have. आपको वेट कम करना है, आपको वेट बढ़ाना है, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, जो भी करना है, right? You want to set up a business which is 500 crores, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Get it? Yes, sir. Thank you very much. Definitely, sir. I'm done for today, ma'am. Thank you so much. I'm not going to eat more time of yours. I really appreciate this opportunity. It was indeed a very informative, very mesmerizing, and a very amazing session, sir, with you. And we are very grateful to have you, sir, and interacting with our students. So I would request Dr. Sadhana Manlui, ma'am, for the words of gratitude, ma'am. Sadhana ma'am, kindly unmute yourself. Yeah. Yes, Anamika, thank you so much. And Vikram sir, right now, कुछ बोलना is like speechless. इतना सारा हमने सीखा, learned so much on time.
as when you asked ki, define time as per your knowledge, whatever you feel like. Even for me, it was the first word was resource. डेफिनेटली सर, रिसोर्स है, भगवान ने दिया है, लेकिन गिनती की सांसें दी हुई हैं, लिमिटेड रिसोर्स है, वी विल हैव टू यूज इट टू द मैक्सिमम. कैसे करना है आपने वो पूरा हमको समझा दिया. एंड आप तो कह रहे थे सर कि लाइक बिकॉज नाउ यू आर 40 सो यू हैव दिस मच ऑफ टाइम. अभी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, आई एम 50 प्लस, तो मेरे पास क्या बचा है. बट सर ये गणित जिंदगी में आनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग whatever you want to utilize as a resource, definitely there are resources given by God, there are resources available in nature, but जो चीजें हमारे पास हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ये हमको समझना पड़ेगा. उस लिमिटेड चीज में सबसे बड़ी चीज है टाइम. एंड आई यू नो सर, आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो कभी नहीं आते. And it is one of the song which motivates me. And every time the time is running, हमको पकड़ना पड़ेगा. पकड़ में तो नहीं आएगा, but हमें इसको यूज करना पड़ेगा. That key you have given us. Thank you so much, sir. Thank you so much. Because you know, अगर मैं आज रियलाइज कर रही हूँ कि मेरे पास टाइम कम बचा है जो वैल्यूएबल है for my students, you know, this is the right time where they should understand how to manage this limited time which we are having. And thank you so much sir for telling us how to invest time, क्योंकि वक्त को अब हमें इन्वेस्ट करना है, which is going to give us returns. और आपने वो बताया कि एक बार तो हम लेंगे और अब हमारे पास कुछ टाइम होना चाहिए जो हमें सोसाइटी को देना है. We need to give. And we need to decide that age of retire. Believe me sir, one of my professors told कि आपको डिसाइड करनी है कि आपकी रिटायरिंग एज कब होनी चाहिए. That means after which you don't have to work, you have to give. I mean earn नहीं करना है आपको, अब आपको spend करना है. And that should be not like in India we say it's 60, 62. उस समय हमारे प्रोफेसर ने बताया था 20, 25, 30 इसके बाद आपको रिटायर होना है, फिर रिट्राई करना है. बिकॉज यू नो उसके बाद आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने लिए करते रहोगे. सो व्हेन यू विल हैव द टाइम टू गिव, सर्विस भी देनी है हमको. सो थैंक यू सर फॉर, आई मीन बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपने लाइट थ्रो किया. हाँ, आपने हमारे स्टूडेंट्स को कोच किया और लाइक एक एक मिनट का आपने हमको बता दिया है कि अब उनको क्या करना है. एंड दिस इज फॉर मी इट्स हाई टाइम, फॉर देम इट इज राइट टाइम, फॉर अनामिका आल्सो इट्स राइट टाइम. यस, फॉर माय टीम मेंबर्स इट इज राइट टाइम. और सर कभी भी लाइक अगर हमने आज सीखा तो आज भी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो गया ये कि मुझे और कैलकुलेटिव होना पड़ेगा. एंड अगेन आई हैव टू वर्क. एंड सर डेफिनेटली आपने वो जो हमसे बोला है कि हमको एक आपका जो गोल है 20,000 को रीच करना, डेफिनेटली इफ वी कैन वर्क इनटू हेल्पिंग यू आउट टू रीच योर गोल, दैट विल बी आल्सो अ प्रिविलेज. डेफिनेटली हम में से बहुत सारे लोगों ने आज उस नंबर को थोड़ा सा तो बढ़ाया होगा. एंड we'll be having many more such sessions with you sir. Every year we add some 400 500 students to our college. तो अभी हम लोग उसमें नेक्स्ट सेशन बिगनिंग पे है, आने ही वाला है जुलाई से. सो अगेन विल बी हैविंग मोर स्टूडेंट्स. सो थैंक यू सो मच सर विक्रम सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, क्योंकि आपका मल्टी गोल्स है, आपको बहुत सारे काम करने हैं. आपके जो मैं देख रही हूँ कि आपको ये भी करना है, उस गोल को भी अचीव करना है. एंड व्हेन यू वर सेइंग यू आर बिट ग्रीडी, नो सर, इट इज रियली लाइक वी नीड टू डू कि अगर ये जो हमारा भविष्य है जो हम देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, यही हमारा कल है. और अगर हमने अपने कल को संवार दिया, जिनमें से आप भी हैं, आज आपने एक कोशिश कर दी है और मैं भी उसी एक नोबल गोल की तरफ बढ़ रही हूँ कि हम अगर कुछ लोगों को ये चीज समझा दें कि आने वाला कल वो बनाने वाले हैं. एंड आई एम वेरी प्राउड यू नो सर व्हेन आई एम अमंग्स स्टूडेंट्स, और जब हम अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं और उनको उनमें हमारा कल दिख रहा होता है
और वही आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि आपकी बेटी को आप अच्छा कर देना चाहते हैं, एंड वी हैव टू बी सेड दैट अगर हम आज ये करेंगे तो कल हमारा सुंदर होगा, भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, यू नो, वी आर ऑलमोस्ट, हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हम सुपर पावर कहलाने वाले हैं। तो ये कौन है? ये हमारे भविष्य स्टूडेंट्स हैं, जो ये वही उस भविष्य को, हमारे सुंदर सुनहरे भविष्य की तरफ हमको ले जाने वाले हैं। So thank you so much. Thank you very much for giving us this insight, that deep insight. And I hope, sir, we'll be meeting again. So thank you so much. Absolutely. This was an amazing opportunity. I really appreciate you having me on this platform. Thank you very much, all of you. And thank you so much, students, for bearing my continuous talk for more than 90 minutes. Like I said, you could have been somewhere else, but you chose to be here. Uh, I'm really thankful to you. Thank you so much. Thank you again, everybody. Thank you, SVA Group. Thank you, IFW team, for giving us a lot of support. Thank you so much, everybody presenting here. Thank you so much. And we are also looking forward to have you, sir, in future session also. I will be there.